Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unstoppable Ray. If you are new here, please like, share and subscribe for more videos on UK's life, hacks, lifestyle and more. आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और कैसे आप टाइम, स्ट्रेस और पैसे बचा सकते हो. Whether you are a student or you are a professional or you newly migrate to this country, this video is for you. So let's get started. यूके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में one of the best transport माना जाता है, especially cities like London, Birmingham, Edinburgh, Manchester. You will find options like trains, trams, tubes, ferries and e-scooters. जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग. आई नो जब कोई नया आता है कंट्री में दे आर सो कंफ्यूज. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू एंड हेल्प यू सॉर्ट योर लाइफ. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू पे एंड डिफरेंट वेज टू पे इट. तो कैश सबसे पहले वन टिप, कैश मत लेके निकलना बिकॉज there are a lot of options other that you can use. अगर आप लंदन में हो तो ऑस्टर कार्ड द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ऑस्टर कार्ड में पैसे कम लगते हैं. ऑल्सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आपको 30% डिस्काउंट भी मिलता है. एंड देन यू कैन जस्ट टॉप अप द ऑस्टर कार्ड्स एंड जस्ट टैप इट एंड गो. दिस वर्क्स एवरीवेयर लाइक buses, trams, tubes. So if you are traveling with the debit card or the credit card, you can just tap and go. That is also very easy and convenient option to use. Also, it is best for the new immigrants or the student who have recently came to this country. Now the third option is travel card. आप अपना ट्रैवल कार्ड बना सकते हो. देयर आर स्पेशल डिस्काउंट ट्रैवल कार्ड्स दैट आर मेड फॉर स्टूडेंट्स. आपको 30% ऑफ, 40% ऑफ मिल जाता है. एक पूरा मंथली या ईयरली ट्रैवल कार्ड बना सकते हो एंड देन यू कैन यूज दोज ट्रैवल कार्ड्स वाइल ट्रैवलिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवलिंग ऑन इन वॉट टाइम. सो अगर आप पीक आवर्स में ट्रैवल करोगे दैट इज़ 6 AM to 9:30 AM, that would be a lot of the expense. It will be expensive plus crowded. But अगर आप off peak hours में travel कर रहे हो, it would be cheap. Also, it will be less crowded. So plan your day accordingly when you are traveling. Now, moving on to the third part, that is apps. Which apps to use when you are traveling? आपका सबसे पहले गूगल. Everyone have Google Maps and Google, use it. It is best. I use Google Maps myself or I use City Maps. City Maps is also good when you are in London. It also beeps when your station comes, and it beeps and tells you that you have to get off at that station, and it's really helpful when you are very tired and you are sleepy and you cannot actually take care of the stations. So that also helps a lot. Also, you can use Trainline for train bookings. This is the best app where you can book all your train tickets and everything. Also use TfL Go if you are in London. It will tell you which zone and where the connectivities are. So that is your best friend. Let's talk about the common mistakes that you have to avoid while traveling. Number one is not tapping in and out. Overcharge हो जाएगा. Not knowing weekly fares gaps. Then the third one is buying paper ticket instead of the digital ones. Fourth one is getting fined for traveling with invalid tickets. This could be up to £80. So yeah, this was it for today's video. I hope you liked the video. If you did, please like, share and subscribe to Unstoppable Ray for more informative videos. See you. Take care. Bye bye.